Hi everyone. I just to ask Sonia, should I use the language Hindi or English, or should I use the mix of the language? Yes, ma'am, mix of the language would be wonderful. Okay. I'm using the language. If in any case somebody facing a issue in Hindi, just let me know. Understanding of Hindi, just let me know. I'll use the pure English after that. Right. I'm using both the languages, so can the matter need to be conveyed properly to the all the business owner who have joined today. It's been 9 years I'm into the practice and into a very different area that I have worked. Now, why company secretaries? In a year when we started a company secretary as a profession and the study as a professional, when there is a very few people know, अच्छा CS भी कुछ होता है क्या? The CS, the CS is not so popular those years, 10 years and 15 years, and I believe उससे पहले तो ये और भी popular नहीं होगा. Why this profession is hidden, why this profession is not popular as compared to other professions are popular. The reason behind it, this Compulsory Act has come in the year 1980s. And other professional who has been so popular as compared to us, they have come in 1957 and later, even more older than that. That's the only reason those chartered accountants and the lawyers professions are older and popular. This profession are not so popular. Reason behind it, we come late, but the way we capture the market, the way this profession carry the knowledge, every business owner needs us. Even before you approaching anybody, you want to start a business, you need a CS first. I'll let you know in this presentation, I'll make sure that you think CS before a CA or any other profession. When we talk about a small businessman, MSME sector में जब हम small business owners की बात करते हैं, the small owners are what? आज के time में when we talk about Indian economy, the Indian economy are known by the small business owners, which is gaining and the startup, and the India is one of the country which is knowing for the startups. Even when the G20 is also looking forward all the countries outside, which is going to be have a lots of investment in the startup in India. Now, how we talk about a small and the startup in India. When we talk about our trademark and the copyright, this is something which is very, very important to our business. Just think, you know, एक बच्चा जब पैदा होता है उसको आप बच्चा या ऐसे वैसे करके नहीं बुला सकते. सबसे पहले आप उसका नाम रखते हो. When there's a child, you need to keep a name first. You always thinking, what should we keep a name for a child? Similarly, when you talk about your business is coming up, you think about what name to be there. Sometime you might be having a very small ideology of your business. Okay, going forward, you're going to be have a company, LLP, or any other formation later on, but the name with you going to do a business is going to be a trademark and that for a copyright as well. My always a suggestion to a small business owner is keep your trademark, keep your name to be registered first. अब इसका benefit क्या है? Why the benefit to have your trademark and the copyright to be registered? For example, you started a business year one. In the year one, you're not going to have a company. But in coming time, you want to looking your name to be registered as a company as well. If you have a registered trademark, the company can be easily formed later on. The second benefit, no one can register with your company, with your brand name, a company, which means you register trademark. In these time, the name will secure with you and nobody can use it. What then those who are small businesses, are family people who want to start a business, get your names, domains, everything to be registered in the very first step. Second, enrolling for a company and LLPs. I am not a LLP supporter because LLP में बहुत सारे glitches हैं, which is a startup, a new business should not go. But in the few of the scenario, few of the professional can do business in the LLP form. For example, an architect. If I talk about an architect, he can do the partnership and do his business in the LLP form only because that is approved by his architectural organization. The LLP to be adopt when you do not have any option or you don't want to have a company. Whereas when we talk about a company need to be there, right? First of all, the best benefit you will have a tax benefit. If you're going to have a company, if you have a manufacturing unit, you only pay a 15% of a tax.
Whereas if you are old company and you want to have a company without a manufacturing, you need to pay only 25%. Whereas in the other businesses formation, you need to pay a tax. तो जो पहले वाला एक thought process होता था, I remember when I talk any professional whose age of 50 or 60, or might be you also experience the same. If you went to a CA, किसी सी के पास अगर हम जाते हैं जो 50 से 60 का होता है, वो कहता है कंपनी में ना बहुत खर्चा होता है, इससे अच्छा है कि आप एक प्रोप्राइटरशिप बना लीजिए, इजी होता है, कोई खर्चा नहीं होता, क्योंकि उसको तो अपने आईटीआर के पैसे मिल ही रहे हैं। तो जो वो थॉट प्रोसेस थी, इट इज चेंजिंग नाउ, because tax rate, this government has changes the tax mentality and they are promoting to maximum company in the company. अब why company so important, या कंपनी बनाने का बेनिफिट क्या है? For example, you want to buy a company. You can have all the finances in your hand. Similarly, you can check this company is worthable or not. It is creating your company goodwill. Being a proprietorship, there is no goodwill you will have in the market. Similarly, you just think आपके पास एक client आता है, he was saying मेरी company का नाम proprietor form में है. You like अच्छा छोटा मोटा business owner होगा, might be has a turnover crores. Whereas if some private limited company came and you were like, yes, this is a company, I can check that person is trustable or not. The trust factor came in because you can check the financials which is available in the public. The company compliance procedure. When we talk about company, yes, one thing is there, you need to do certain compliance in a year. If you're doing a certain compliance in a year, believe me, there are very less of the fees need to be incurred. But in case if you are not addressing the compliances on time, then there is a good penalty need to be paid. Good penalty, which means there is number of time of delay. Why these compliances need to be done on time? Just think, there's two companies. One company is doing proper compliance, filing their balance sheets and director reports and everything. There's another company which is not doing the same equally. Which company you going to trust more? The company is obviously following the compliances on time, which means creating a goodwill is also creating the trust when you're doing your compliance regularly. And these all things that I'm talking about, that only done by a company secretary. There's no other profession who are claim that they are the best people who can do. Some people have a good practice to do, but the CS are only person who are specialized for all these things. Similarly, when you're running a company, you need to maintain some records as well. For example, if you're running a business, you are obviously maintaining your bill books and everything. Similarly, if you're running a company, you need to maintain some certain record. For a small company, you need to maintain only 4 board meetings, whereas some of the register need to be maintained. If it is a family-owned company, the one-time registration document maintained, that need to be only repetitive every year. But that is a very small the requirement that every company need to be maintained. And the most important thing, sometime that's happened, you are running a company today, and the next year you're not having a company, you might be resigning your company. Do your director KYC every year. If you're not doing, you're going to be disqualified as a non-compliant KYC, and your DIN will going to be deactivated. And whenever you're going to next to run a company and you want to, start a company and you need to activate and need to pay 5,000 of penalty. When we talk about a penalty for running a company on LLP, I always say just hire a good professional. If you're hiring a good professional, you don't need to pay any penalty, because penalty is but the professional fees are very less than a penalty. Sometimes people pay, and I've seen people are paying it up. Now, it is very important topic. I picked it up in this session, and because I believe India is running after startup and startup funding. When we talk about funding, everybody has like, let's run to the CA. Yes, in all the process, CA is very important profession that a company and a business owner need to keep with him. But when we talk about startup, for example, you have everybody heard about Shark Tank, सबने देखा है, and there are so many big startups जो कोविड के बाद निकल कर आए हैं, and people has invested making करोड़पति out of. India is an upcoming time known as startup formation companies country. In the startup companies, what the India is looking forward, and being you also can have your startup funding. Being a small company, being a startup, first step that you need to go forward, you need to register yourself as a startup. Second, you need to develop a pitch deck. I'm going to read the things on the screen as well.
Pitch decks. I'm going to explain one by one. Assess your financial need. फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे मैं बैंक से लोन लेने जाती हूँ, यू नीड टू पे 13-14%, विच इज वेरी हाई अमाउंट. वेयर एज इफ आई गो फॉर टू अ इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट 2 CR 3 CR ऑन सम 1% or a 5% of equity and some 0% of our debentures as well. In that perspective, that I receive the fund with the minimum rate of interest or zero rate of interest, where I increase my business without paying the interest. This is one thing that you need to assess your financial need. Second, develop a comprehensive business plan. Whenever you approach any investor, you need to have a comprehensive plan, which plan that you're going to be have. Any amount the investor is going to invest your company, how you're going to utilize that you need to be prepared. Conduct the market research. Yes, for example, you're into that kind of, I'm taking one example as a sugar industry. Sugar industry in India is one of the industry which is a negative growth. Negative growth, for example, they are having a turnover 2 CR, 2000 CR, 3000 CR, and they having a profit of 5 crores, which is less than a 1% and 0.5%. We talk about these industry as negative. Whereas few of the industry which having a return of 18%, 20%, and EBITDA positive of 20 to 30%, that when we talk about these kind of industry, which industry you are following, that research is very, very important. Because whenever you approach any investor, you need to know which industry you belong, what kind of return that industry is coming, what kind of market size that industry is coming. Then only that investor can assess you. You need to assemble a strong team. You need to hire a company secretary while you are approaching, because the documentation is the very first thing. After you want to start another business, you need 5 CR. But whereas you need to have somebody who can frame that legal thing in your to your investor. Identify the potential of investor sourcing. The next and important, just a second. Craft and pitch decks. This is very popular. I think most of the professionals are working on the pitch decks only. Pitch decks is compressive of your all the equation of you're going to raise as a funding. For example, you want to invest. For example, you want to take an investment from the Hindustan Times. The Hindustan Times, you need to identify which industry it belongs to, what kind of proposal you are coming, what kind of pre and post valuation that company is taking, and the expansion of, and what kind of industrialization and what kind of share valuation you are coming towards. This is a very important document that you need to create. Without this document, no investor is going to interest in your business and going to invest in your business. Create a comprehensive statement. When we talk about the pitch decks almost cover everything that I have written in front of the screen. Whereas when we talk about the creating of comprehensive financial forecast, this is very much important, because if you're raising a 10 CR of a funding and today you're charging a premium of 300, 400, this forecasting is equal important. That forecasting might be giving an ideology to the investor, okay, what kind of investment, what kind of amount he's going to be increasing coming time. Preparing this networking and making the connection. Sometimes the investor need to be that person which is going to be help you in business, not in the terms of money, in terms of the business planning as well. Be prepared of due diligence. Yes, when we talk about you have a mind, you have a business, you have what kind of amount you want, what kind of investor you want, then you require a due diligence. Any investor who going to be invest in your business require a due diligence and the fully due diligence. When we talk about due diligence, that due diligence is include the financials, startups, records, legal, and any legal case are pending towards the company for paying against. Then sometimes they are businesses when I see they have a high potential in the terms of so many investors are with that key, everyone there might be one business and 15 investor he was having. In that investor he can have maximum negotiation, what kind of terms he going to be get agree with that, finalization of a deal, making and the track of the funding and plan for funding rounds. अब फंडिंग राउंड का मतलब क्या होता है, आई सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आई थिंक दिस प्रेजेंटेशन विल हेल्प यू आउट. फॉर एग्जांपल, यू हैव टेकन ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट
with the investor. Now you require more funding. You, with the permission of your earlier investor, you are going for further investors to invest in a company for growing yourself. When we talk about startups, startup funding is one of the biggest thing is happening in India. Every businessman need to look after this. When going forward, when we talk about, as of now, we talk about एक छोटे बिजनेस ओनर को क्या करना चाहिए और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. Whereas startup I pick as a startup, a small businessman, क्योंकि छोटा सा mindset जो है can become a big businessman. जैसे car 24 का अगर मैं आपको example दूं, तो car 24 they are very highly educated. I think IIMs होंगे, might be, I'm not sure for IIMs. तो उसने वो क्या था, रोज पेट्रोल पंप पे जाता था, one of the founder, और वो रोज देखता था कि यार दे आर सो मेनी चैलेंजिंग, लोग आ रहे हैं एंड दे आर नॉट हैप्पी, दे वांट टू चेंज देयर कंपनी, पर उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे वो अपनी कंपनी सेल कर सकते हैं और इजीली दूसरी कंपनी बाय कर सकते हैं. उसने उस प्रॉब्लम को 1 महीने एड्रेस करा. 1 महीने एड्रेस करने के बाद ही बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर कंपनी, दैट्स कॉल्ड अ कार 24, जो आज की डेट में हमारे सामने है. अब कोई भी स्टार्टअप उठा के देख लीजिए, दे स्टार्ट विद द आइडिया, दे गॉट द इन्वेस्टमेंट एंड दे बिकम अ बिग बिजनेसेस इन इंडिया. Going forward, when we talk about a small to mid size, when we talk about the small to mid size, then I always talk about जो मिड साइज बिजनेसेस होते हैं उनके पास पैसों का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, वो बिजनेस एक्सपेंशन के पीछे भागते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द स्मॉल बिजनेसेस एंड द मिड साइज बिजनेसेस, द ओनली डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ बिजनेसेस, स्मॉल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर मनी, working capital funds, so can they have a business. And whereas we talk about a business, mid-sized businesses, when I actually experience as a professional, they always looking for expansion. When we talk about expansion as a business, we going forward to have merger, acquisition, and joint ventures. When we talk about merger is something then, when two companies want to work together and want to launch something. Recently, if you have experienced, Toyota and Maruti has some combination of car which is captured to the market. There are many other examples you can see in the routine ki two big companies coming together to have another three big launches in the market. Acquisition, if you're going to see Haldiram, Tata is buying the Haldiram. The proposal has been acquisition. These are the acquisition. Tata is looking in now Haldiram no more will work in India. They will going to acquire that businesses and might be expand. If recently you have seen Subway is already by some other international buyer, and you will find a new survey in 2024. These kind of acquisition is happening. Then joint ventures. Joint venture, I majorly focus and experiences when there's international client coming to India to do business with some Indian partnership. Let's understand ki what kind of things you people can have in your businesses, and might be you having a challenges. So you can take only a CS help. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जब भी आप बिजनेस एक्सपेंशन की बात करते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन में आपका पैसा लग रहा होता है. यू माइट बी बाइंग समथिंग, यू माइट बी इन्वॉल्विंग सम टेक्नोलॉजी, यू माइट बी, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जीक्यूशन ऑफ एन एग्रीमेंट. जब आपने कोई टेक्नोलॉजी आप दे रहे होते हैं, जब अपना पैसा आप कहीं लगा रहे होते हो एक्सपेंशन के लिए, वहां पे एक एग्रीमेंट को होना बहुत जरूरी है. बिकॉज इंडिया में एक दूसरा फेस ये भी देखा जाता है कि जब फ्री में किसी को पैसा मिलता है तो वहां पे डूबने के चांसेस होते हैं. अगर आपको लगता है कि एक्सपेंशन मेरे लिए बहुत काम का, यू नीड टू रिजर्व योर राइट, यू नीड टू रिजर्व द लॉसेज दैट माइट बी कमिंग विद दैट एक्सपेंशन एज वेल. An agreement on the shareholder must be mutually agreed upon. So when we talk about big acquisition, big transfers, big mergers, there is a agreement of the shareholders equally important. Sometimes few of the client come to us with the agreement and the transaction already happened, everything has happened. We seen there is no consent with the shareholder, which means that whole transaction is going to vanish. Actual owner of the company do not give any consent with the transaction, and sometimes we actually find these issues. Valuation of the agreements between the party required. Valuation is as equal as important. Why I'm saying valuation is important, when we talk about the people is investing in the terms of CCPS and CCPS convertible preference shares or a debenture, the valuation is very important. Might be you're investing your amount
in the preference shares and the debenture today, and what kind of valuation at the time of selling, at the what time of conversion you're going to have that amount, that valuation need to be determined today, and the formula need to be created today. The final agreement of execution of the transaction need to be executed between the share transfer representative, submission of the form. This is very important. What I found, sometime one client has came to us and we find yes, he did the transaction, shareholder approvals are there, but he missed the filing with the ROC. When we talk about how government going to address and how the government going to recognize this transaction is going to be done, the only these kind of transaction only done when you have done these form filing with the register of company where your company has been registered. Once you have submitted, you will see that the transaction has been validated and registered with the registrar, because something which is not registered with the registrar can be modified, can be altered, can be changes, the facts can be changes, and that can be effect to the transaction the person is having. Appointment of arrangement, that is another important. When we talk about any investor is coming or you are going to invest in expansion of your business, sometimes people missed out, they don't want to become a director in that particular joint ventures and the mergers. And director, to becoming a director is very important, or reserve your right till the you're not becoming a director. And the most important rights of IPRs. Whenever you're going to have an acquisition, sometime I'm recently going to share one example that we are taking care of one of the transfer of Hindustan. The Hindustan is taking over one particular company. The brand name is Eclipse. It's a US patented technology. And he is, that company is registered, IPRs in India as well as the US. And they are selling the mattresses all over the India, and they're having a turnover of 500 crore somewhere. When they are taking over it, they forget to, they just got to, they just find it out the IPR of US patent is not with the company, it's with the some other person. And similarly, when we go through the check, when we see the IPR right in India is some individual family member. But I am taking over a technology where a company is selling it up. If it is something IPR right is into the name of individual or family member of existing company, then might be there's no issue. But at the time of taking over, I am only selling the IPR. I'm selling the brand. That's why I'm taking over that company. And I'm not having IPR rights. So we have executed three more agreements with the individual rights. This is how these things is very important. When we talk about mid-sized company who are going to have an expansion in their market, they need to understand what kind of thing they need to be take care of. Agreements, they need to have a proper shareholder mutual understanding and the agreement with the shareholder. Valuation, the final agreement जो भी आपने execute किया, that need to be updated with the ROC, director reserves rights and the IPR rights. This is my most of the favorite topic and our team specialization, including me. We call our foreign direct investments and outer direct investments, outward direct investment. When we talk about FDI and ODI, we need to understand why this topic is very important. Might be the people who are listening me today, they have a plan to start their businesses in UK, Europe, US, anywhere in the world. बट व्हाट्स मेक यू टू स्टॉप, आप लोगों को वो चीज कौन रोकती है कि आप ये बिजनेस यूएस में नहीं कर सकते, यूके में नहीं कर सकते, और आपके पास पोटेंशियल है? आप लोगों को शायद डर लगता है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग में तो नहीं आ जाएंगे. आई हैव हर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, दिल्ली में तो ये चीज बहुत नॉर्मली है कि हमारे यहाँ पे बिजनेस ओनर कहते हैं कि सुमन मनी मनी लॉन्ड्रिंग में तो नहीं आएंगे. नो, इफ यू वांट टू एक्सपेंड अ बिजनेस इंडिया से बाहर, तो आप इजीली अपना बिजनेस जो है इंडिया से बाहर एक्सपेंड कर सकते हैं. आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? यू नीड टू हायर अ कंपनी सेक्रेटरी फॉर दैट. ही इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड इन द फेमा. सेकेंड, आप किसी भी कंट्री में आप बिजनेस करना चाहते हैं, यू नीड टू नो दैट कंट्रीज लॉ. आपका प्रोडक्ट वहां पे सेल हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है. अगर आप देखोगे कोविड से लेके आज के बीच में, मैंने पर्सनली देखा है जो अमेजोन यूएस है या यूरोप है, यहाँ पे इंडियन बिजनेस ओनर्स के बहुत सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं. माइट भी आज आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा, आप भी शायद सेल करते हो, तो वहां पे उनको सेल करने में प्रॉब्लम नहीं आता, उनको अपने आईपीआर राइट्स रजिस्टर करने में सेव आता है. उसके बाद उनको उन कंट्री में कंपनी बनानी पड़ती है. अगर आप इंडियन कंपनी हो और बाहर एक कंपनी बनाना चाहते हो, तो वो आपकी इंडियन कंपनी की सब्सिडरी हो जाती है. अब ये आपको प्लान करना होता है कि आप किस कंट्री में क्या फॉर्म करो.
क्योंकि हर इंडिया का हर कंट्री के साथ अपना एक डबल टैक्सेशन अवॉइडिंग एग्रीमेंट हो रखा होता है। अगर आप अपनी इंडियन कंपनी की सब्सिडरी दुबई में बनाते हो, इट इज नॉट सजेस्टेबल। Whereas you want to open anywhere in the Europe and the US and Canada, you can open it as a subsidiary. Second, when you have a subsidiary, you need to compile your financials of Indian company with your all the subsidiary, whether in India and outside India. Only you can file your financial with Indian government. हम जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की या ओडीआई की बात करते हैं, अब आते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपने सुना होगा एफडीआई आ रही है इंडिया में। फॉर सारे अभी यूएस के प्रेसिडेंट बोल के गए कि हम 4,000 बिलियन के आसपास इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। दीज ऑल आर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में चार ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे एफडीआई नहीं आ सकती। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ने सेक्टर 100% अलाउ कर रखे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई फॉरेन पार्टनरशिप है, आप बिल्कुल आ सकते हैं, या उनके अलग से कंपनी बनवा सकते हैं एफडीआई के फॉर्मेट में। इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी चीजें ध्यान रखने वाली बात है। पैसा किस मोड में आ रहा है, किस कोड के अंदर आ रहा है, और किसके अकाउंट में आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इनिशियल स्टेज ऑफ माय प्रैक्टिस की एक स्टोरी सुनाती हूँ। इट्स अ वेरी बिग ब्रांड नाउ इन इंडिया। आई मेट दैट पर्सन इन ईयर 2014, एंड दिस पर्सन हैज फॉर्म अ कंपनी। उसने किसी अकाउंटेंट को पकड़ा और उसने कंपनी बना दी। और उस अकाउंटेंट ने जिससे भी कंपनी बनाई, तो उसने वो कंपनी इंडियन कंपनी बना दी और उससे कैश में कैपिटल डलवा दी। देन लेटर ऑन व्हेन ही अंडरस्टूड कि नहीं, इसको और कंप्लायंसेस करने हैं, तो हमने बोले कि तो फॉरनर है, अब ये फॉरनर अगर इंडिया में पैसा लेकर आया होगा, तो इसको तो ऑब्वियसली फेमा कंप्लायंसेस करने हैं, इसको तो आरबीआई के रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। देन आई अंडरस्टूड कि 1 लाख रुपीज उसने कैश में डाल दिया, विच इज अ बिग ब्लंडर। उसकी कंपनी का स्टेटस पहले तो इंडियन कंपनी छोड़ के फॉरेन या फॉरेन शेयर होल्डिंग होना चाहिए था। देन ऑब्वियसली उसकी रेक्टिफिकेशन कुछ नहीं था, हमने उस कंपनी को क्लोज कराया और फिर उसको नया फॉर्म करा। प्रॉब्लम क्या आता है, आप इंडिया में अगर आप फॉरेक्स या किसी फॉरेनर को बिजनेस वेलकमिंग करते हो, तो आप आरबीआई की कंप्लायंसेस के साथ पंगा नहीं कर सकते। बिकॉज कहीं जब अगर आरबीआई ने आपको नॉन कंप्लाइंट पकड़ लिया, तो आपकी कंपनी के ऊपर यू विल हैव अ ट्रेस एवरीवेयर। If you're going for a loan, you're going to approach a bank, you approach anywhere, you want to buy some international company or NBFC companies, you always has a trace. You always have questioned by the RBI. Because whenever there is a clearance from the department, every department need to give the clearance on that. Advising a non-residents regarding the investment in India. जब हम नॉन रेजिडेंट की बात करते हैं, अपने ही लोग जो पराये हो चुके हैं, आई ऑलवेज सेड दैट जो नॉन रेजिडेंट हैं वो ऐसे इंडियन हैं स्पेसिफिकली जो पराये हो चुके होते हैं, एंड दे नॉट टू नो कि इंडिया में बिजनेस पोटेंशियल बहुत है। मैं अब इंडिया से कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। एनआरआई जब कोई इंडिया में आकर बिजनेस करना चाहता है, तो हमें बहुत सारी चीजों और बहुत सारे एंगल्स का ध्यान रखना पड़ता है कि अब वो अगर इंडिया में आ रहा है, तो वो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन तो नहीं कर रहा या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहा है। क्योंकि एक एनआरआई ही, इंडियन नॉन रेजिडेंट ही एक ऐसा बंदा है जो इंडियन है और जो बाहर जाके नॉन रेजिडेंट हो गया, वही एक ऐसा बंदा है जहां पर हमें आरबीआई की कंप्लायंस को 3 गुना देखना पड़ता है। पहला, अगर उसने डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन कर दी, तो ऑब्वियसली वो फेमा के ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं आएगा। वेयर है अगर उसने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर दी, देन ही नीड टू कवर अंडर द फेमा रेगुलेशन। ऑब्टेनिंग द आरबीआई, ऑब्टेनिंग आरबीआई का मतलब क्या है यहाँ पर? दे आर फ्यू ऑफ द थिंग्स। पुराने टाइम में जब अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था, पर दीज इयर्स द ओनली द intimations go. But for example, you want to form a company with the Chinese, you need to take an approval now, because in the COVID there's a regulation came in. These are the RBI always come new. अब finance bill आएगा, finance bill में you will, the coming finance 2024 finance bill, you will find some leniency in the forex. You might find the good understanding with the forex. RBI might be allow another 25% in some of the sectors and all. These are the obtained. If those sectors you want to come, those restricted sector, you need to come with the RBI. दिस इज हाउ अभी तक जो मैंने डिस्कस करा, वी डिस्कस अबाउट अ स्मॉल कंपनीज में सीएस की शुरुआत जरूरत आपको पहले दिन से पड़ जाती है। देन आई डिस्कस अबाउट कि एक स्टार्टअप क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया में, जो आजकल स्टार्टअप इतना पॉपुलर है, तो आप उस चीज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं।
Then I talk about small size and mid size businesses जो हैं, mid size businesses का क्या approach होता है. अगर उनका आज भी startup है तो they can take it. मैंने अपनी interpretation ली है कि mid size businesses expansion का ज्यादा सोचते हैं. देन एक्सपेंशन के लिए जब जा रहे हैं तो अगर आप फॉरेन अंडरस्टैंडिंग है तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं. एंड बाहर से अगर आप इंडिया में कोई जॉइंट वेंचर लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं. अब आ जाती है इंश्योरिंग द कंप्लायंस विद द लेबर लॉज. अब अब एक मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने इनिशियली बताया नहीं है. सीएस नीड टू बी रिक्वायर्ड इन एवरी फेज ऑफ द कंपनी, राइट. कुछ जब कंपनीज बड़ी हो जाती हैं दे हैव इंडिपेंडेंट सीएस इनसाइड. एंड दे और जो कंपनी स्मॉल मीडियम साइज में रहती हैं दे आर हायरिंग सम सीएस टू सो कैन दे कैन हैव अ प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ एवरीथिंग. सीएस का काम से कंपनी बनाना या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना नहीं होता. सीएस का काम वो सारे लॉज को देखना होता है जो एक कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं. अब लेबर लॉज जो होते हैं, अगर आप लेबर लॉज की बोलो उसमें सीएस की क्या है. सीएस हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द लेबर लॉ. लेबर लॉ में आपके क्या मिनिमम वेजेस होने चाहिए, आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, किस सेक्टर में आप काम करते हो. आप शिपिंग कंपनी तो नहीं हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो नहीं हो, आप दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, यूपी में हो. आपके मिनिमम वेजेस किस स्टेट में कितने हैं दैट नीड टू बी कंप्लाई. बिकॉज अगर वो नहीं हुए तो आपकी लीगल टीम, आपकी लीगल सेक्रेटरी टीम इज आंसरेबल टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. They need to ensure that every employee of the company avail the labor's employee. When we talk about the labor laws, में मैं ESI PF भी include करती हूँ. ESI compliance and PF compliance are equally need to be done on time. Sometime I seen it and I experience also experience also कि there are the few people who are doing PF and ESI compliances on regular basis and they find it out कि यार ये मेरा बंदा है, ये from very long time he's just doing it up, but they do not know they are complying with the PF. It is not applicable. Sometimes the PF is not applicable to the company. That ensure will be done by a CS. The calculation of PF and it might be done by your HR, but what kind of employee, which employee has the PF, which has the issue of the employee labors, and going forward when the company is not following the labor laws, the labor will go against the company to file a case against the company as well. Companies' employee policy is another important matter. I experience so many of HR as come and like कि मैम HR policy हम बना लेते हैं. What I've experienced, good HR, I'm not talking about good HR, I'm talking about the HR in India. They are just copy pasting the policy. They are not understanding which industry you are following it up. Sometimes, shipping companies altogether, because shipping companies, sometimes the employees are working more than a 24 hours, I think practically. And the labor law will be going to different. The eatings, the facilities, and everything need to be according to the law which is applied in India. And the HR of that company has not aware about it. Whereas you have a mining company, then there's a different rules and regulation came in. Going forward, now we have the state laws. अब स्टेट लॉ की हम जब बात करते हैं, स्टेट लॉ में कंपनी सेक्रेटरीज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एडवाइजिंग. जब advising what kind of state law is applicable on a company and what kind of thing that need to be there. Here I want to stay, share a story. इंडिया में कॉस्मेटिक एंड ड्रग कोविड के बाद एक्सट्रीमली इंक्रीज हो गया है. और everybody is going to register with the drug department and the cosmetic department. One. Recently, we have studied one thing. जो perfume होता है, perfume. I have an example. I can show you. This is the perfume that might you people have it. आप perfume की ना bottle या package उठा के देखना, उस पे ना तो आपको cosmetic license मिलेगा, ना ही drug का तो खैर मतलब ही नहीं बनता. But this is the product which deals in the cosmetic industry. बट इस प्रोडक्ट की ना तो इंपोर्ट पे कॉस्मेटिक लाइसेंस है, ना ही सेलिंग पे कॉस्मेटिक लाइसेंस. Might be legal methodology are there, many other acts which is applicable on that product. Because you're not manufacturing it up. It might be you're manufacturing, the manufacturing license will be applicable. If you're importing, India में 90% perfumes import होते हैं और sell होते हैं, repackaging होते हैं, बाहर से repackaging होके इंडिया में sale हो रहे होते हैं. This is how cosmetic industry is might be creating in coming time. They might be have the licenses on this product as well. Cosmetic license, how a professional, how a CS and how your consultant will tell you that this license is applicable or not. Apart from cosmetic license, every license is applicable on this factory. Pollution control.
I don't know about many other CS. I talk about myself. Pollution control is one of the my specialization. If there's no file is coming from my office, most of the time the office is calling, "मैम कोई file नहीं आई इस पर." So which means the and pollution control आप देखेंगे, if I specialize in Delhi pollution only, when I see the pollution has categorized, COVID के बाद there are so many changes in the industry. I seen people जो कोविड में इंडस्ट्रीज में नहीं थे, दे वेंट टू इंडस्ट्री, एंड बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं. वन ऑफ द इंडस्ट्री आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, प्रिंटिंग इंडस्ट्री. प्रिंटिंग इंडस्ट्री ऑरेंज कैटेगरी में फॉल करती है, और इसका रीजन है कि वो एक पर्टिकुलर केमिकल यूज करते हैं जो प्रिंटिंग में हल्का सा धुआं रिलीज करती है, एंड दैट ऑरेंज कैटेगरी इज अ टफ टू हैव द रजिस्ट्रेशन का. रेड आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज रेड हैज अ वेरी comprehensive license to be required. Otherwise, the white license is easily be available. This is one. Second, cooperative societies. When we talk about cooperative society, मेरे पास इस पे तो I can bet no other profession is working. Corporate societies are one of the societies, public trust, and the NGOs are the one of the societies. I don't know why other profession is not working on these areas. Cooperative society, every Delhi mein specifically, every particular space has a corporate society, and those corporate societies need to be formed, need to be created, need to be have a register with the sub registrar, and similarly a public trust, private and public trust need to be registered with the sub registrar, and it's a very simple procedure. But most and most important are drafting of those documents. I am going to share one more story over here. There is a club running in Dehradun, Doon Dehradun club karke. When I just have a huge argument in the morning, he has totally wrong document. I don't know who has created the document. Document totally wrongly drafted, wrongly created, and wrongly adopted by the committee of the members. So that of formation of societies, formation of trust, documentation is very, very much important. When we talk about companies earlier, we need to create a minutes. When बोला small company के लिए आपको 4 से 5 minutes तो बनाने ही पड़ेंगे. In the corporate society and trust, without minutes you can't exist. Minutes of any, whether you're a corporate society or a trust or a company, it is a legal document. कोर्ट में अगर केस हो जाता है तो आपके फाइनेंशियल्स को बाद में कंसीडर किया जाएगा. द मिनट्स ऑफ योर मीटिंग्स आर मोस्ट only legal document which is a court going to accept it. The non-trading society, land sealing, and the revenue laws. Role of a CS in the IPR and WTOs. I'll explain the WTOs. एक स्टेटमेंट मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोफेशन से सुनी कि आप इंडिया में इज अ सीए एंड ही इज अ वेरी सीनियर सीए, आप इंडिया में ट्रेडमार्क करा लीजिए, आपका वर्ल्ड वाइड ना ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड है. पहले तो ये स्टेटमेंट उनकी गलती, मैंने बोला नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट. इंडिया में अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है या कोई कॉपीराइट्स ले रखे, वो इंडिया में ही प्रोटेक्टेड होंगे, किसी और कंट्री में प्रोटेक्टेड नहीं हो सकते. WTO की जिस दिन एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं वहां पे इन्होंने अग्री कर रखा है, कंट्रीज ने अग्री होने के बाद सिस्टम में इम्प्लीमेंटेड नहीं है. अगर यूएस में आपका ब्रांड किसी और ने रजिस्टर कर लिया तो आप उसे डिमांड नहीं कर सकते. नीड टू टेक दैट पर्सन टू द कोर्ट ओनली. तो पहली चीज तो ये है कि अगर जब मैं सीएस के रोल की बात करती हूँ, तो सीएस इज वन ऑफ द राइट पर्सन हु हेल्प यू आउट कि आपके आईपीआर राइट कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, आपके आईपीआर को कैसे जा सकते हैं. अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, बहुत अमेजिंग एग्जांपल बताती हूँ, और आई रियली लाइक टू शेयर दिस एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम. मेबलिन्स की या नायका पे जो लिपस्टिक शेड्स आती हैं, या फिर प्लाईवुड की शेड्स, कलर शेड्स आती है, तो आजकल अपनी शेड्स के या सब प्रोडक्ट की कैटेगरीज का नाम देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जिनटेक दे दिया, वट एवर द नेम दे आर गिविंग टू. जब वो इतना यूनिक नेम देते हैं, एवरीबडी इज गोइंग टू रजिस्टर दोस नेम एज कि नायका सो एंड सो XYZ, प्लाईवुड ग्रीन प्लाईवुड सो एंड सो करके दे आर गोइंग टू सब कैटेगरी. And for example, if somebody is using your big brand and people are using your subcategory as well, you can't claim your brand until you register.
Whereas sometimes I've seen the challenges and find the challenges, and only a CS can identify as well. When you see sometimes that your logo and your brand has a unique design, a unique creativity in your logo. If you have a unique creativity, now go for copyright as well. After the trademark, go for copyright as well. Reason behind to have a copyright, the writing pattern, the design of the pattern need to be copyright as well. अदरवाइज समटाइम क्या होता है ना, इफ यू फील समटाइम कुछ पैकेजिंग इतनी कैची होती है, उन पैकेजेस को आप दूर से देख के पहचान लेते हो, अच्छा दिस इज दैट प्रोडक्ट। मैकडोनल्ड्स का एम देख के दूर से समझाते हैं मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स रजिस्टर एज अ कॉपीराइट एज वेल विद द एम। मैकडोनल्ड इज अ नेम, द डिजाइन ऑफ द लोगो इज कॉपीराइट। सेकेंड क्या होता है, आपका नाम आपका रहे, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्रोफेशनल हु आर टेकिंग केयर ऑफ योर आईपीआर राइट्स एंड चेक कि किसी और ने तो रजिस्टर नहीं करा लिया। इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या है ना, आप कुछ भी पे करके यू कैन रजिस्टर एनीबडीज नेम, बट इफ यू हायर अ प्रोफेशनल हु क्रॉस चेक वेदर दिस नेम इज प्रॉपरली विद यू, somebody has not filed, you need to file that opposition as well. सेकंड, पेटेंट। पेटेंट इंडिया में ना बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में, लोगों को 90% पता ही नहीं होता कि पेटेंट क्या होता है। आज with this presentation I'm going to share of one experience of mine. I have this mouse. You people can see it. Why this mouse is different than other? Because he has patented his industrial design. Patent design is different and patent is different. लोगों को 90% पता ही नहीं होता कि this is falling under what category. अगर आपका प्रोडक्ट एक गाड़ी दूसरे से अलग क्या है, दिस इज ओनली द इंडस्ट्रियल डिजाइन ही हैज रिजर्व इट, then you need to see ki what kind, if you are coming with that particular industry and what kind of registration is going. Sometimes you're coming for a patent, might be a particular product require a patent design, you're paying a 1 lakh rupees patent design under the 25,000 is only the 25% of the patent one. Second, if you're going anywhere, this is the most important these year as well. अगर आप यूएस में या यूरोप में ऑनलाइन सेल करें, ऑफलाइन की मैं बात नहीं कर रही, ऑफलाइन में यूएस में तो ये इंश्योरेंस केम इन, तो आप इंटरनेशनली अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, नीड टू रजिस्टर योर ब्रांड इन दैट कंट्री एज। ड्यू डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या बैंकर्स भी होते हैं, अगर आप लोन भी लेने जाते हो, अगर आपने कोई कंपनी ले रखी होगी, कंपनी के अंदर आपने लोन क्रिएट कराया होगा, दैट लोन नीड टू बी रजिस्टर्ड विद योर कंपनी, अगर आप उसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे तो जितने भी बैंक्स होते हैं, और अगर मान लो कल को आप अपना बैंक ओपन करना चाहते हैं, विच यू कैन डू, एनबीएफसी ओपन करना चाहते हैं, यू कैन ओपन दैट। उस कंपनीज में किसी भी कंपनीज को लोन देने से पहले उनकी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस होती है, दैट नीड टू बी डन बाय अ सेल्स इन प्रैक्टिस। दीज आर द अदर जोन। कभी भी आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सुने, म्यूचुअल फंड सुने, इंश्योरेंस कंपनी सुने, स्टॉक एक्सचेंज सुने, आईपीओ सुने, आईपीओ में मैंने पहले एक सेशन दिया है, आईपीओ है वेरी बिग टर्म टू बी यूज। सिक्योरिटी कंपनी या फॉरेन कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। Non-banking financial company are the company which is need to be these all companies are special nature of companies. I given these company as a name of special nature of company. Non-banking financial company are the company who are giving loan and doing investments. Mutual fund. आप ये सोचो, आप जो म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, what they are mutual fund company which is registered with IRDA. इंश्योरेंस कंपनी नीड टू बी रजिस्टर्ड विद आईआरडीए। आप अगर किसी कंपनी से इंश्योरेंस लेते हो, कंपनी क्लेम देते हो, आप वो कंपनी कैसे आपके लिए ऑब्लिगेटेड है? वो इसलिए ऑब्लिगेटेड है, दे आर रजिस्टर्ड एंड टेकिंग द स्पेशल परमिशन फ्रॉम आईआरडीए। एनबीएफसी ने आरबीआई से लाइसेंस लेती है, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी दे नीड टू टेक अ लाइसेंस फ्रॉम आईआरडीए। वेयर स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज जो होती है, जो स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते हैं, दे नीड टू टेक अ स्पेशल लाइसेंस विद सेबी। लिस्टिंग, जो एक कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी है, एंड दे नीड टू गो विद द आईपीओ, दे कैन गो विद द आईपीओ। अब पब्लिक का पैसा लग रहा है ना, दे आर मोर सिक्योर, सेबी इज देयर। Where security companies and the foreign company, I explain the FDI, we call a foreign company and cover it already. I think, Sonia, I'm done with my presentation today and we can open for the questions. We have some questions through our participants, and if you can just go through one by one and Yeah, I think let me see. yeah. How to determine whether the cap capable of starting startup of a business?
This is the first question, which is written by Mr. Agarwal. The question is, how do I determine whether I am capable for starting a business? है इसका आंसर आपको ज्यादा अच्छे से पता है. Second question जो है, what about the people who are living in India and owning a business in Hong Kong? Sir, if you have, this is a good question. I really want to answer this question. Uh, you can live anywhere and you can have your businesses anywhere. For example, you are living in India and you are having a business UK, US, and Hong Kong. And we need to identify, first of all, ki what kind of formation you have in US and India. If you have there is no company you're running in India and you're having a company in Hong Kong, then only the Hong Kong compliances need to be complied. And whatever the amount you're coming in, taking in India, that considered to be income, you need to show, right? Then Mr. Agarwal has the same question. Hi, nice session. Thank you very much. Need to know how much percentage of shareholding required for Indian director in case of FDI. As a director do not require any percentage, shareholder require a percentage. अब फॉरेन कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेन कंपनी में दो तरीके से कंपनी बनती है. पहली कंपनी बनती है, द फर्स्ट कंपनी विल बी लाइक द 100% विल बी होल्ड बाय अ कंपनी which is already existing outside India or a individual. 100%, if you talk about the 100% subsidiary, that need to be a 100% hold. If you have a 50-60%, that can be a associate company which can be formed. Percentage of share is, I mean, should India should, in a case of FDI, percentage, I mean, should India hold in case of FDI? So it depends upon your agreement, ki what kind of percentage you want to have it. You just only keep one thing in your mind, that uh, uh, that what kind of business that two of the businesses agree, and you need to see ki in that particular business that you're taking up, it is approved by Indian government or not. What about IPR registration in India is demandable in China and Netherlands? About the IPR registered in India, it is demandable. I think, sir, I answered this. Whatever the name, the brand you have registered in India, in if you're doing your business in any other country, you need to register them specifically or separately. I know. I'm in trade in a stock exchange market in India. How can I help me in the progress and okay. Thank you, sir. आपका नाम नहीं आ रहा, डॉट डॉट करके आ रहा है, एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन. अगर आप स्टॉक मार्केट में खुद से पैसा लगा रहे हैं या आप किसी के बिहाफ पैसा लगा रहे हैं, तो आप अपनी खुद से एक स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर कंपनी ओपन कर सकते हैं. स्टॉक ब्रोकर कंपनी का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक लाइसेंस होता है, एक नॉमिनल फीस होती है, लाख 1.5 लाख रुपए की तो सेबी की फीस है. तो आपको वो स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना है और आप अपनी खुद से एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ओपन कर सकते हैं. उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है. मोस्टली ये देखा गया है कि स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज जो होती है प्रोफेशनल्स रन करते हैं. इफ यू वन ऑफ द प्रोफेशनल, वी कैन हेल्प यू दैट. Then we can have a discussion. I'm an international consultant, airport, highway, and design and construction management, and I work mostly as an employee of this and this, and I am MD, owner, founder of this and this. Sir, your question is not there. It's your introduction. Let me know your question, and I'll happy to answer. We are there. You can write your question. I didn't find the question in your question, Mr. Ramesh. Mr. Abbas, when we can have a discussion with you. Any discussion, anybody has a personal discussion with me, we can have right now. Or if you want to have a personal, then you can, take, Sonia से आप बात कर लीजिएगा, and then we can have a call. Ma'am, we have a few people who would like to have one-on-one interaction with Please, you. Sonia. Yeah, If yeah, you we allow, can so have it. can I ask my IT team, Karthik, can you unmute for them? And like Vasim ji is there, Rajesh Pandey ji is there. They want to ask few Yeah, yeah, questions directly. So if you can assist in that, Karthik. yeah, yeah.
Wasim ji, please ask your question. Mr. Wasim, you need to unmute yourself. I can see you are muted. Wasim ji, Azhar ji, please Ji, ask your question. I am available to ask a question if Yeah, please, Please, sir, please, please. please. ma'am, basically, my issue is that I am always worried about the fact that I am going to get into FEMA, and the ED will be after me, No, sir. like you rightly You stated in know, the beginning of the in I the miss this. webinar. Hi, so sir, I आपने am ना one of कहते हैं those. ना लोगों की दुखती रग पे हाथ लगा दिया है. I am one of those. थैंक यू फॉर आस्किंग आस्किंग दिस क्वेश्चन. मैं अपनी प्रेजेंटेशन में मिस करके बोलना. फेमा इज अ सिविल लॉ नाउ. ईडी आपके पीछे नहीं आएगा. ईडी आपके पीछे कब आएगा? फेमा में देयर इज अ फैमिली लॉ कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग. इफ देयर इज मनी लॉन्ड्रिंग दे फाइंड, एंड if they find the fluctuation of funds in the going the wrong form, if it is something Ma'am, happening under the fraud. I would like to share my structure with you on a separate personal call and Okay, see okay. if I am exposed to anything. Okay, okay, okay. Then I'll take a personal thing. Might be you are aware of some of the transaction you might be having in your business. We can Hmm. have that one to one. But for all the people who are listening right now, I'm just saying one thing. FEMA is a civil law. 2 years back when we call RBI, were like, you need to force that particular organization. Now RBI is saying, ma'am, this is a civil law. If you have an issue, court mein chale jaiye. Right? So do you have, we can meet on the call as well. I can understand the structure, and going forward, I can understand what kind of business structure you have, and then I try to suggest my best out to you. Exactly, ma'am. Exactly. That's why my company is registered in Hong Kong, and Okay. my customers are in Europe. ओके. आई So, अंडरस्टैंड व्हाट आपका क्वेश्चन पढ़ के ही मैं समझ गई थी कि आपका क्या रहेगा. बट जितना मैं समझी, आई डोंट थिंक सो दैट यू नीड टू बी अफ्रेड. यू जस्ट ओनली हैव वन चैलेंज. जो आपकी बिलिंग पेमेंट रिसीप्ट होती होंगी वो थोड़ा सा देखने वाला होगा. अदरवाइज आई डोंट थिंक सो दैट यू हमारी शुड पेमेंट बी भी सारी अफ्रेड ऑफ हांगकांग ही एनी. आती है. हमारी पेमेंट्स भी सारी अच्छा, तो हांगकांग. इंडिया में लेट्स डिस्कस ऑन द पर्सनल कॉल, नॉट नॉट टू डिस्कस ओवर या कि प्लीज. अमाउंट कैसे आते. देन आई लेट यू नो, बट आई पर्सनली आई फील दैट यू विल नॉट हैव एनी चैलेंज. Can we have next person to unmute himself and ask? Please ask your question. Is there anybody else who would like to ask any question, please? There's some question on the question chart. I'm just reading it up. Thank you for a wonderful session, ma'am. I have a question. Can a CS handle and manage the law in extension of the company already existing in Kuwait, but extension to be kept to be startup in India? Uh, I think name is not coming over here. Yes, sir. When we talk about a CS, I'm talking about a normal CS, which is very fresher. Uh, that CS can handle your working, but you or the handling of working, for example, what is the amount is going outside, what kind of compliance that you need to take care that only a CS can do. If you want to see कि कुवैत में if you want help, इंडिया में ना एक चीज बहुत अच्छी है. I want to share to everyone who was attending here. India is a combination and gathering a law of all over the world. कुवैत की जो law है is very complex in the terms of formation, taking licenses, and expensive country. Then you might be need a person who are helping your CS on that existing country as well. I'm talking about Kuwait. I'm not talking about any other country. In case you're running in business in US, Europe, then your CS is more than sufficient to handling everything from your Delhi office or Indian operations. But some of the country you require somebody who's helping there. उसका reason क्या है कि कुछ वहाँ पे आज भी system offline चलता है. And that only be helpful for somebody who can run out there. मिस्टर दीपक का एक क्वेश्चन है. Running a traveling agency based in India, if we start a business same in Singapore or UAE,
we should start as a subsidiary company of Indian or we should register a separate company? सर, अगर आप सब्सिडरी कंपनी बनाते हैं ना, सब्सिडरी कंपनी से क्या होगा, फ्लो ऑफ मनी विल कम अंडर वन विंडो एंड देयर इज नॉट कॉम्प्लेक्सिटी टू बी ऑफ रिपोर्टिंग। एक कंपनी है, उसी के अंदर मर्जर्स हो रहे हैं एंड एवरीथिंग। एंड अगर आपको लगता है कि दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन, यू शुड गो। आई ऑलवेज प्रेफर अ सब्सिडरी कंपनी टू बी ओपन इन द डिफरेंट countries, but there are some people who are open the separate company, which I don't prefer personally. And Singapore is very easy to form a company. You need to have some security. You can open. UAE is expensive, but UAE maybe easily you can have a traveling agency because वहाँ पे demand बहुत अच्छी है इस industry की, and you easily open that. Yes, सिंगापुर में you need to have a the separate company secretary of Singapore because वहाँ की Indian और सिंगापुर के similar tight compliances हैं that independent profession need to be handled. UAE में आपको separate profession की जरूरत नहीं होगी, UAE में आपको एक separate CA की जरूरत होगी। I think I did not left any question. I think chat में कोई question है क्या? I am with all this other conclusion issue. अच्छा ठीक है. I think Sonia, I have covered up. If somebody want to talk to me, they can come. Mr. Sir, please unmute yourself. Yeah. हेलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. मैडम, मेरा एफएसएसआई का लाइसेंस है और हाँ मैं हाँ. फूड प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है मैडम कि बेसिकली मैं आयुर्वेदिक हर्ब्स इन्फ्यूज करके प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है मैडम कि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अलग होता है आयुर्वेदा का और सॉरी एफएसएसआई का, और प्लेन लाइसेंस अलग होता है, ऐसा इस तरह का कुछ रूल है मैडम? और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि उसके लिए मुझे अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि घर से ऑपरेट कर सकता हूँ मैं? सर देखो, फूड लाइसेंस के लिए ना, फूड लाइसेंस अपने आप में ना एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। मैं आपको फूड जी। लाइसेंस सबको एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहती हूँ। फूड लाइसेंस तीन तरीके के होते हैं: हाँ, बेसिक, स्टेट एंड सेंट्रल। बराबर। बेसिक और सेंट्रल की अपनी रिक्वायरमेंट्स है, आपको फॉलो करना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है, एक ही फूड लाइसेंस में आप मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, रीलेबलिंग ले सकते हैं। आपको अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड सर, जैसे आपने बताया आप आयुर्वेदा में है, ऐसे आजकल इंडिया में ना कोविड के बाद लोगों ने आयुर्वेद हेल्दी प्रोडक्ट्स घर से बनाकर बेचना शुरू कर दिया है। तो उस केस में मेरा लोगों को ये सजेशन है कि आप स्टेट का बेसिक फूड लाइसेंस ले लीजिए। आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। बट जी। अगर आपके प्रोडक्ट पे आयुष की रिक्वायरमेंट है, आयुष हाँ जी, लाइसेंस की कहीं से रिक्वायरमेंट आती है, तो वो आपको सेपरेट लेना पड़ेगा। आपको बराबर। फैक्ट्री ओपन करने की जरूरत नहीं है। कल को हाँ, अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और यू वांट टू सेटअप अ फैक्ट्री, तो फैक्ट्री सेटअप करने के टाइम पे आपको फैक्ट्री लाइसेंस और पोल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस जो होगा उस स्टेट का, हाँ वो जी, हाँ आपको जी, लेना वो पता है पड़ेगा। मुझे। हाँ, तो ये मुझे मेरा हाँ पैरेलल जी। क्वेश्चन ऐसा है मैडम, अगर मैं हाँ जी। अमेजोन पे आपका प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, मान लीजिए कुछ XYZ फूड हम्म। प्रोडक्ट है जिसमें मैं हम्म। फूड के तौर पे, एक्चुअली आयुष का रूल ऐसा है कि अगर आप मेडिसिन के तौर पे दे रहे हैं दवा, फूड दे रहे हैं, तो वो आयुष का लाइसेंस लगेगा। और इफ यू आर गिविंग लाइक अ फूड फूड प्रोडक्ट, तो आपको उस तरह का लाइसेंस हम्म। का जरूरत नहीं। आप फूड में थोड़ा इंफ्यूज कर सकते हैं, ये एक सर बात। आपको फूड लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा, उसमें तो क्वेश्चन ही फूड नहीं है। लाइसेंस मेरा लिया हुआ है मैडम, तो मैं क्या हाँ जी, हाँ अमेजोन जी। और उसमें डील कर सकता हूँ? ऑनलाइन शॉप कर बिल्कुल कर सकते हैं। अब सर बेच मैं आपको सकता हूँ? अमेजोन की स्टोरी बता देती हूँ आप सबको। अमेजोन और फ्लिपकार्ट की कुछ इंटरनल गाइडलाइंस हैं एंड चेकलिस्ट है। हाँ जी। उस चेकलिस्ट के हिसाब से अगर आपके पास सारे लाइसेंसेस हैं तो आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर ठीक है उसके मैडम। हिसाब से अगर आपके पास लाइसेंसेस नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। तो आप ओके क्या ओके। कर सकते हैं, अभी जितना मैंने सुना है ना सर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको आयुष की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हाँ, नहीं। आप अमेजोन पे अपने आप को रजिस्टर करके देखिए, अगर उनकी कोई फर्दर रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आप एक क्लेरिफिकेशन भी दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैडम। हाँ जी। ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। I see a few of you would like to connect with ma'am directly. So I can request my team member Megha. She will help you connect with her. Okay. And right now, I think we just had a very interactive and powerful session from ma'am, and she has just shared such extraordinary information with all of us, and we are really grateful and thankful to her.
And I also would like to conclude this session and thank everybody from my team, and may hope that we all connect soon with another session, and Yeah, sure. we have these kinds of interaction and share knowledge to make each self empower, and we aspire always, like being Udmita Helpline, uh, to uh, to make the worldwide MSME successful. Thank you, each one of you, and thank you for your support and participation. Thank you so much, Sumanji, for all Thank you your for support the and time. Yeah, opportunity. thank you so Yeah. much. Thank you. Bye all. All the best. Thank you.